वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पोर्नोग्राफी के एपिसोड नंबर 4 है। तो इस पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इस एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करने के लिए कि आपको अंदर से मोटिवेट होना ज़रूरी है आपका, कि आपको पता हो कि यार फॉर व्हाट पर्पज़। आपको बेसिकली अपना एक गोल सेट करना होगा अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज विद दिस काइंड ऑफ सिन, विद पोर्नोग्राफी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस, आप ज़िंदगी में उस लेवल पे एडवांस कभी भी नहीं कर सकते, यानी आप अपने उस गोल को अचीव ही नहीं कर सकते। फॉर सपोज एक बंदा है जो चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूं। एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेसमैन और कार शोरूम ओनर, और इस तरह कुछ भी अगर उसने ज़िंदगी में कुछ बनना है अपने, तो अगर वो एक गुनाह के साथ स्ट्रगल करता रहेगा लाइफ में, स्पिरिचुअली नहीं बात कर रहे हम, रिलीजियसली बात नहीं कर रहे, सोशली बात कर रहे हैं, फिजिकली बात कर रहे हैं, कि अगर वो एक गुनाह के साथ इतना इन्वॉल्व रहेगा और अगर मैस्टरबेशन या पोर्नोग्राफी के अंदर लगातार वो लगा रहेगा, तो वो अपनी चीज़ों से एक किस्म का डी-अटैच हो जाएगा, एक किस्म का लाइक एक बंदे के अंदर और एक चीज़ के अंदर पाथवे बना होता है ना, तो दैट कम्स विद फोकस। तो बंदा अपना वो फोकस लूज कर देता है किसी और चीज़ में अंदर पढ़ के। एंड पोर्नोग्राफी इज नॉट जस्ट अ थिंग दैट आज आप आज कर जाएंगे और कल आप भाग जाएंगे। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। शैतान का कभी भी शैतान को अपने आप को दो धोखे देने मत दें। उसका पहला धोखा आपको कैसा है, गुनाह करा के, वो गुनाह उसने आपसे करवा दिया है, डोंट थिंक ओवर दैट। अब तौबा करना आपका पहला गोल है। शैतान का जो पहला आपने जो उसने गोल था वहाँ पे पूरा किया गुनाह करवा के, दोबारा जो दूसरा धोखा और उसका गोल आपको कराना चाहता है वो आपसे, वो ये है कि आपको बोले कि यार अब कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। एंड यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट। आपको उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट दैट। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप उठें और तौबा करें और बोलें कि या अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया है, और गिड़गिड़ाएं उस चीज़ के ऊपर और रोएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर आप अपने कभी गुनाह के बाद तौबा करते हैं तो उसके बाद 2 नफल इंसान को पढ़ने चाहिए। मैंने इसके ऊपर पिछली वीडियो में काफ़ी बात की हुई है, जो मेरी सारी वीडियोज़ हैं। तो इसके ऊपर अब आप बात आते हैं कि लाइफ के पर्पज़ के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, गोल सेटिंग के ऊपर, कि देखें यू हैव ऑलवेज बीन डिजाइंड फॉर पर्पज़। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी दुनिया में ला के पैदा कर दिया कि बस एक और बंदा दुनिया में आ जाएगा, नहीं। अल्लाह ताला की एक हदीस हमारे आती है कि हमारे पास के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर बंदा हर सेंचुरी के अंदर हर एक बंदा ऐसा होता है जो कि दीन के फ्लैग को लेके आगे लीड करता है। ठीक है, ये मफहूम है, हदीस वर्ड टू वर्ड हदीस नहीं है, ये इसका मफहूम है। तो व्हाट इफ दैट यू आर दैट पर्सन, द वन वाचिंग दिस वीडियो, कि हो सकता है कि आप इस वीडियो के 10th व्यूअर हो, या फर्स्ट व्यूअर हो, या 2, 3, 3rd या 4th व्यूअर हो, इस तरह हो। तो व्हाट कि अगर आप वही बंदे हों जिसने इस सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी जो भी चल रही है अभी, व्हाट कि अगर आप इस सेंचुरी के लीडर हो जिसने लीड करना है इस सारे प्रोसेस के अंदर, एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस थिंग्स हियर एंड देयर, एंड स्पेसिफिकली पोर्नोग्राफी। आई गिव सम डिसएडवांटेजेस। व्हाट इफ कि अगर आपको हम बताएं कि पोर्नोग्राफी एक ऐसा सिन है जो कि पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेसेस और एक्टर्स खुद इसको डिफेम करते हैं और इसको डिमोरलाइज करते हैं कि ये किस तरह दे आर ट्राइंग टू फ्रेम यू। फॉर एग्जाम्पल दे आर जस्ट टू गेन मनी, यार उनके लिए और क्या है, दिस इज जस्ट अ बिजनेस। लेकिन अगर वही लोग जिनके लिए ये बिजनेस है वो खुद ये बोलते हैं कि दिस इज बैड एंड दिस शुड बी स्टॉप बिकॉज दे आर यूजिंग गर्ल्स, दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे आर, यार मैं आपको बताता हूँ इसकी बात। अभी ये हम आप यहाँ पे इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे इंटरव्यू अटैच हो जाए, एंड फोकस ऑन द ऑडियो ऑन हाउ दैट एक्ट्रेस सेज के दे आर लाफिंग व्हेन आई एम टेलिंग देम दैट यू विल गेट मी किल्ड, दे आर लिटरली लाफिंग ऑन दैट सेंटेंस। तो इंशाल्लाह ये भी इंटरव्यू में अटैच हो जाएगा। Let's go through this step by step. How did a girl who was brought by her parents to the United States from Lebanon, your home country, schooled in the United States, clearly smart, went to university in Texas, read history. How did you get involved with the sex porn industry? I don't think low self-esteem discriminates against anyone. It doesn't matter if you come from a great family or if you come from a not so great background. I struggled my entire childhood with weight, and I never felt attractive or worthy of male attention. And suddenly, my first year of college, I start losing all this weight from making small changes. And by the time I graduated, I was ready to make a bigger difference. I felt extremely self-conscious about my breasts because that was the first thing to go when I lost all the weight. I lost about 50 pounds. I don't know how many kilos that is, or stones. Well, it's a considerable amount of weight. Yeah. It changed your body, changed you physically. Completely. So my biggest insecurity was my breasts. So I wanted
to more or less go back to what they normally were. And once I did that, I started garnering all of this attention from men, and I was never used to it. And I felt like unless I held on to it and kind of did what was asked of me or what was expected of me, it would go away. And after feeling what it was like, that validation and, you know, the compliments for the first time, I did not want that to go away. You were spotted, I think, on a street. I mean, there you were a young graduate wanting to sort of find a job, and you were spotted on a street by a guy who said, I can work with you, and clearly he opened up and said, it's the porn business. What was it in you that far from running away, was drawn into it? It wasn't. That's not how it was. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you know, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling. Things like that. And after I came and toured the studio, you know, it was very respectable. It was a gorgeous location. It was in Miami, in Doral, Florida. It was clean. Everyone who worked there was nice. All of their cubicles were decorated with family photos. Like, it was nothing dodgy or that made me uncomfortable. And after the first time I went in wasn't the first time I filmed a porn movie. It was the second time. The first time was more so, do you want to do this? Like, sign the paperwork, et cetera, et cetera. These guys, they just saw you, frankly, as a money machine. Absolutely. But you still had no advisors, you had no lawyer, you had no nothing. So I was what 21-year-old has a lawyer on retainer? I'm just trying to get my head around how stressful this must have been, and whether even now, because you sit here so poised, and obviously a lot of time has passed and you've moved on, but do you think there is some sort of post-traumatic stress that is in you from this experience? Yes, and I think it kicks in mostly when I go out in public, because the stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. It makes me feel like I lost all right to my privacy, which I did, because I'm one Google search away. Yeah, and those images you cannot expunge. You have no right, even though it is deeply personal to you, you have no right to remove them from anybody's view around the world. Yeah. It is very hard. It is. And I'm just thinking, this isn't, I mean, this story is your story, but frankly, it's also the story of other porn actors and actresses. I honestly started seeing that recently after the interview came out, and people started reaching out, and all of the emails go, my manager checks them, and when he gets stuff like that, he filters them and sends them to me. And reading the words of some of these girls who have been sex trafficked and forced into porn, and all of these stories of girls whose lives have been ruined by it, and by men who have taken advantage of them, and by contracts that they didn't even understand the jargon of, it makes me feel like, okay, maybe it was good that I started talking, and that I posted this interview, and that I'm speaking out now, because other people feel the same way. And even if they don't relate on as deep a level as, you know, doing porn, they can relate on the level of being insecure and being pressured into doing something they didn't want to do. You were wearing the Islamic headscarf, often known as hijab, and of course then it developed into a sort of sex scene. You must have known how provocative that was. I verbatim told them, you guys are going to get me killed. And they said? They just laughed. Why didn't you then say, I'm not doing it? Intimidated. उम्मीद है कि आपने ये इंटरव्यू सुना होगा पूरा. इसमें से मैंने शॉर्ट करके काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हुई थी. सो पॉइंट क्या था कि when that actress said कि I told them that you guys will get me killed, the reply was they were laughing in exchange of replies. They were laughing. तो इवन आपने अस्तगफिरुल्लाह में मतलब ये नहीं कहना चला कि जाके पोर्नोग्राफी की वीडियोस देखें, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट समरी कि इवन दे मेक फन ऑफ हिजाब, they make fun of other things, and they even make fun of Muslims. They make fun of the relation between
son and a mother. They make fun of the relation between a father and a son, and so many other things. Even like they make fun of the relations between a brother and a sister. यानी वो बहन भाई के, वालिद और उस बेटे के, माँ और उसकी बेटी के, या माँ और उसके बेटे के, इस तरह के इस्लाम के अंदर सेक्रेड रिलीजन्स के मजाक उड़ा रहे हैं पीपल ऑन द पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री व्हाटसोएवर। तो आप जब किसी एक ऐसी वीडियो को खोल के देखते हैं तो आप उसी बंदे के लिए इनकम जनरेट करवा रहे हैं। तो थिंक इट लाइक दिस, थिंक विद ओपन अ विंडो टू योर ब्रेन कि आप उन बंदों की चीज़ को एक किस्म से बूस्ट कर रहे हैं अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, ठीक है, लेकिन स्टिल आप उसकी चीज़ को बूस्ट करके ऊपर लेके जा रहे हो। मुझे पता है कि आपके एक व्यू से किसी की पोर्नोग्राफी ने किसी ने बिलियनर नहीं बन जाना, लेकिन अगर उसकी पोर्नोग्राफी वीडियो सपोज करें कि यहाँ पे थी, अगर आपके व्यू से वो यहाँ पे भी आई है ना, तो गूगल का या फिर यूट्यूब का या किसी का भी जो सिस्टम होता है, व्हाट यू कॉल दैट, रोबोट कीवर्ड सर्च व्हाटसोएवर, जो भी सारी फिलॉसफी है चीज़ के पीछे, तो एनीथिंग दैट इज बीइंग व्यूड दैट विल ऑटोमेटिकली गो अप। अब शायद वो आपका फर्स्ट व्यू था, शायद आपका मिडिल व्यू था, लेकिन आपने समहाउ एक चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से आपने उनको एक इनकम जनरेट करवाई है। आइदर वो $50 था, आइदर वो thousands of dollars थे, या आइदर इट वाज अ पेनी, लेकिन आपने उस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। आपने इस्लाम का मजाक उड़वाने में, आपने किसी सेक्रेड रिलीजन या फिर किसी सेक्रेड रिश्ते के बारे में मजाक उड़वाने के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो जब आपकी किसी चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन जारी है तो नो वेरी वेल दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हर गुनाह का सवाल आपसे भी होगा, लेकिन इस बात को अपने दिमाग के अंदर इस तरह सिंक्रोनाइज करें कि व्हाट इफ़ आप भी उनके गुनाह के अंदर किसी तरह शरीक ना हो जाए। और एक विंडो यहाँ से भी ओपन होती है कि समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट जस्ट टू बी कूल, माशरे के उस गंदे फ्रेम के अंदर अपने आप को फिट करने के लिए अक्सर लोग ऐसा भी कर देते हैं कि हम इस वीडियो को शेयर कर दें। अस्तगफिरुल्लाह, आप उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर स्टोरी है, आई एम श्योर कि आपने सुनी होगी वो, लेकिन मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको, कि एक लड़का था बिल्कुल इस तरह जिसने पेड ईमेल सब्सक्रिप्शंस बाई की हुई थी गूगल पे इस तरह, और जस्ट आफ्टर सम टाइम ही गेव द सेम अकाउंट जिसके उसने सब्सक्रिप्शंस बाई की हुई थी, उसने उस अकाउंट का आईडी और पासवर्ड जो भी था सब कुछ अपने दोस्तों को दिया हुआ था। एंड व्हेन ही डाइड, दोज फ्रेंड्स वर गेटिंग ईमेल्स ऑफ दैट पोर्नोग्राफिक वीडियोस फ्रॉम दैट प्रीमियम अकाउंट। वो उसके सारा कुछ जो जा रहा था ना, सारा गुनाह, यानी फॉर सपोज करें कि आप फोत होते हैं और आपके अकाउंट के ऊपर कोई बंदा पोर्नोग्राफी की वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो उसका गुनाह है वो उसको तो मिलेगा, लेकिन आपसे उस बच्चे को कब्र में सवाल हुआ था उसका। इस पर मुख्तलिफ उलमा का मुख्तलिफ रिव्यू था, जो भी था कि इस तरह होगा एक्सेट्रा, लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट। लेकिन द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट शेयर एटलीस्ट। यार, आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो उस गुनाह को एटलीस्ट अपने आप तक महदूद रखो, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो कोई भी गाना है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन उसको अपने आप तक महदूद रखें। डोंट जस्ट स्प्रेड इट लाइक अ फायर कि ये देखो, इट्स नॉट समथिंग टू शेयर अबाउट यार, इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुनाह कर रहे हो, और इस्लाम में इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किया गया है। और कुरान में इवन इसको हमें एक छोटा सा हिंट मिलता है इस चीज़ का, कि जब कुरान पाक में हमें आयत मिल गई है कि जिना के करीब में जाके भटको, तो इसका क्या मतलब था कि हमें एक तो जिना करना है, तो अस्तगफिरुल्लाह, दैट्स अ ह्यूज सिन, और उस पर बहुत बड़ी पनिशमेंट भी है, लेकिन जब उसे कहा गया था कि उसके करीब भी ना जाकर भटको, तो व्हाट डिड इट मीन? इसकी तफसीर में आप जाएं तो दैट समहाउ रिलेट्स विद दिस पोर्नोग्राफी, कि आप उस चीज़ के करीब जा रहे हैं और आप मेंटली अपनी माइंड ऑफ स्टेट को इस तरह डेवलप कर रहे हैं कि यार आई वांट टू डू दिस फिजिकली। एंड आई एम सो मच श्योर दैट 99% ऑफ दीज पोर्नोग्राफर्स दे ऑब्वियसली हैव अ विश टू डू दिस इन लाइफ। The haram way, the halal way, that's another topic, but obviously they have a wish. So ये और वैसे भी that's natural, that's another topic, we will discuss that later inshallah, but for now stay away. That's the point. Jazakallah khairan. Hope so you felt everything, hope so you understood everything right. मैंने अभी टाइमर देखा कि लंबी वीडियो हो गई है, I didn't want to make this long, तो जज़ाकल्लाह फी मन अल्लाह बारकल्लाह फीक। لا إله إلا الله